under whose leadership we have started the whole idea of starting online classes, moving from offline to online. So I would request him to address the gathering and start the session and the first PTM session. Over to you, Father. Yeah. Thank you, Sanyukta Miss, for the words of welcome and introduction. Dear parents and all of you, my dear students, I'm very happy to see all of you in this evening in a platform which we never thought we may have to use in a few months back. 3 months back, when immediately the lockdown started, probably none of us had a clue what is going to happen in a few months down the line. But the reality has struck. All of us have been away from schools, especially the students. And even though they were away from the school, their classes, their schooling had been happening. And we feel very privileged and happy about it. And probably when we met in the month of February, in the beginning of February, for the last PTM parents meeting, we never imagined that the next meeting will be in the month of June, that too in a platform like in a virtual platform wherein we will be meeting in a Zoom. And after having conducted or gone through the last 2 Zoom meetings or the PTMs, we feel really happy and privileged that we are one of the first schools to initiate this process of having even a PTM through a virtual platform. And dear parents, as Sanyukta Miss has already said, we feel very, very privileged and happy about it. It is all because of the cooperation that all of you have extended. All of you have lived up to the expectation, rose to the occasion, and it is because of that we are able to have a meeting like this in an evening. You know, at the very beginning, let me extend all of you a sincere and hearty welcome to all of you parents. This is lockdown time, and I know most of you may be back from your offices, and it is a convenient and a comfortable time. That is the reason we have chose a time like this, 7 to 8 in the evening. And we are very happy to see father, mother, children sitting together and ready to listen to our resource person, Mr. Anjan Chowdhury. So dear parents, we would like to, on behalf of the entire SFS fraternity, teachers, students, and management, I would like to welcome all of you parents for this first meeting through this virtual format. And I also would like to welcome our dear students. In fact, very happy to see some of them in a platform like this. We have met for the last 3 months, and I can see some of them have put on some weight, extra weight, maybe because, you know, they get a lot of rest, less study, and then, you know, probably they are eating a lot of good food as well, cooked by their own mothers and, you know, people at home, and maybe that makes them a bit heavier. But then we are very happy to see all of you dear students. Your smiling faces really enthuse every one of us. So a very hearty and sincere welcome to all the parents and to all the students. So let us give a round of applause and welcome one and all. So please give a round of applause. Thank you. And then, you know, parents and students, why do we have a PTM even in a tough moments like this? We have this PTM just to let you know that we do accompany you wherever you go. As teachers and as school, we consider it as our duty and responsibility to accompany people, accompany students, accompany parents wherever they are. And the word accompany means walking together, going together, moving ahead in spite of all the challenges and struggles that we have. And accompanying is the duty and responsibility of every teacher and every school. So we consider it as our bounden duty to be with you, especially during these moments of struggle, pain, difficulty, and to a certain extent, a sense of alienation between the school and the students. So we would like to bridge that gap, that alienation, and that is the reason
we are here in this format to meet all of you and to share our greetings with every one of you. And dear students and parents, I can assure you, because of the lockdown, your students have lost nothing. In fact, they have lost nothing, because I can tell you that we started the online classes on 26th March for the students of class 10 and 12. And for the students of class 1 to 9, we started the online classes on 16th of April. And I can tell you, we were one of the first ones to start that. And ever since we started it, we changed the platforms. We continue to grow along with you. WhatsApp group, and then we have the YouTube channel, and then we have moved towards the Zoom. So we are moving from one thing to another. And in fact, we are learning, students are learning, parents are learning, and it is a continuous cooperative learning that happens. And through the online classes, you have the regular chapter test, you have the periodic test, the morning speeches that you have regularly as it happens, the presentation for the students of class 9 to 12, and then the Dieselite Fiesta, literary competition, cultural competitions, and the singing, the dancing, and then in the next phase, we will be also having the remaining co-curricular activities as well. So I can literally tell you with proud and confidence that your children have lost nothing, and we will ensure that they lose nothing. So thank you so much for all that cooperation, and welcome to all of you. Now, we have with us a very illustrious person to tell us something about parenting and to let us know how to spend these days of lockdown in a more fruitful and effective manner. And that is none other than Anjan Chowdhury. Anjan is a person who is familiar to all of you. I'm sure he has met every one of you in the past when we had the parents meeting. And he is a person who can literally entertain any crowd, be it parents, be it students, be it teachers. And I can tell you, he has traveled across India, he traveled across Northeast, and more especially, he has traveled practically every SFS schools in Northeast India. And as far as Alo in Arunachal Pradesh, where the SFS school is situated, he has visited even there, trained teachers and students. He is a well-acclaimed trainer, even to the politicians and the bureaucrats and IAS officer. He is a regular trainer. So in him, we have a person who is worthy for each and every one of you. I know you are great parents, wonderful parents, and great, educated, and quality parents needs a quality trainer. And that is a person that we have. So on behalf of every one of you, let me have the joy of introducing and welcoming Anjan Chowdhury for the next session. So let us give a round of applause and welcome Anjan Chowdhury. Please give a round of applause to Anjan Chowdhury. Thank you so much, Father. Thank you very much. Thank you, Anjan. Now over to you. Good evening, everybody. I think I'm audible, everybody. I am. Yes. Not. Am I audible? Yes, sir. Yes, Great. sir. Yes. I would request the participants. I am muted too. Am I audible now? Yes. Audible? Yes. All right. Yes. Very good evening, everybody. And very good evening, Father, Sangyukta ma'am, and everyone who makes me feel connected to so many wonderful people that we have in front of you right now. And that to back at home, seated at home, we could have the entire world connected. Till some days ago, we had no clue life would be that beautiful also. Parents, teachers का मतलब ही होता था वापस स्कूल में जाओ, वापस फादर का बोरिंग लेक्चर सुनो, वापस मैम लोगों का बोरिंग स्पीचेस सुनो, फिर वापस ऐसे ही खाली हाथ लौट के आ जाओ. फिर आते वक्त हम लोग बोलते भी थे, क्या बकवास किया, ऐसे हम लोग को बुला के लेके गया. But today I think we have had the privilege of not complaining because we are at home, absolutely in our comfort zone, and getting all possible means to connect with each other. I congratulate everybody from the deep core of my heart to be a part of SFS family.
I would not be able to say that I am a legal, authorized, an SFS family member. But more than that, I think I owe an emotional obligation. I love this school. I love this congregation. And rightly said by Father, I had been traveling to all the extensions and branches of SFS, almost all, meeting the provincial heads and all the principals around. And I could find one thing, which is what I would want to tell you as a neutral party, as a trainer, that the most coveted schools of Guwahati, for which we die to get an admission for our children, are also perhaps not performing as much as SFS Narangi has been doing. On a very close acclimatization with the teachers fraternity here, I know all done. To all the people, am I audible? Audible? Yes. Yes. Yes, yes. Now, You are to audible. all the teachers that I have met in duration of various courses and programs in the school, I will tell you, your children are in the most safest hands when it speaks about SFS school. It's like, it might sound like I'm a spokesperson of the school, but actually I'm not. I would want to be a very, very neutral commentator when I speak about these wonderful and prolific teachers. You are in the third standard now. Your child is in the third standard now, fourth standard, probably third and the fourth standard altogether. There could be few people who could be having new admissions or could be from the kindergarten or the class first standard or the second standard, who might have had a 2-year experience maximum to maximum with the school. But then I'll tell you, as in how days proceed and as in how you go forward, you'll find across the powerful prowess of the academicians that are around us. And Father, to have given me a chance to speak on parenting, I thought I would share not Google downloaded talks to you all people. We would share experiences of how parenting has been tough to us and would be even tougher in the next few years to come when we raise up our children. Academically strong, physically strong, mentally strong, and above all, very, very important, morally strong. And this is where the battle starts in parenting. I, as a parent, and we all as responsible parents, we have become parents all of a sudden without any training. And nobody has taught us training. And it's not that available in Google because Google itself is very new and advent in human civilization. We have become a parent by default, and we have not known what parenting is all about. There has been certain parents who might think as well, हमारा माँ बाप ने भी हमें पैदा किया, हमारा माँ बाप ने भी हमें बड़ा किया, और फिर हमें बच्चा बड़ा करने के लिए हम लोग को कहीं से भी सीख लेने का जरूरत नहीं है. You are right. We don't have to learn from anyone, anywhere else, not even me also. But we need to learn from our own self as to how we have been conducting ourselves in raising up these toddlers till class 3 and class 4. Remember when you took your son or your daughter to the preschool some 3-4 years ago, and while the school gate was locked day 1 and all these children cried, you also wiped off your tear once. You also thought that was one time that your child has gone out of your hands and reaches. And today, when you find that the child has been growing up, class 2, class 3, class 4, you will see they've come down somehow to the mid-level of the primary. Soon, the primary level gets over and the middle school starts. Soon, the middle school gets over, the high school starts. And so also your academic coordinators keeps on changing. So also your subjects keeps on changing. So also your behavior, so also the behavior of your children keeps on changing. Bachaketa behavior change hoy goi thakibo, academic coordinators change hoy goi thakibo, teachers change hoy goi thakibo, and the intensity and the magnitude of the complaints of your children would also increase. And your irritation with the school coordinators will also increase. At one point of a time, jodi ketiaba school opera complain ahe apunar tat apunar bachcha loi apunar lagibo jiboner ataitke dangor dushman hol academic coordinator to ei guli di guliye mari pelabo lagisile ei academic coordinator thokar karone mur bachchar ijjot beya kore dise. This is what we will think when we will come out.
And while we will come out, we'll keep on whacking the child. बदमाशी करे करो, तू करनी ईमान के ता कथा खुनी बोले गिले, इतना बदमाशी क्यों करता रहता है? तुम्हारा वजह से इतना इज्जत खराब हो गया. बच्चार complainer कारणे मार्क देवताकर इज्जत स्कूलर बेया होई गोसे जोदि आमी भाबू, we will never be able to raise up our children. And the very interesting part is when the coordinator, when the school teacher will complain, आपका बच्चा ने ऐसा बदमाशी किया, the parent will stand up and say, नहीं, गलती से भी मेरा बच्चा ऐसा बदमाशी कर ही नहीं सकता. Parents, you're wrong, because you have not seen your child in the school activities in front of 50 children amidst the suffocating environment of the classroom or in the school. How does his behavior change? The psychomotor skills that keeps on changing every time, along with the nurturing that he brings from home, you are clueless. I would request Mrinal sir to please mute up the parents because we get distracted. Now, while we talk about these kind of difficult behaviors, we will have only one problem in our life: frustration, irritation. And this irritation is always something that leads towards defense mechanism. You'll always try to protect your child. You'll always try to defend your child. And you'll always realize कि स्कूल ने गलत बोला, पेरेंट्स से भूल, टीचर से भूल कथा पातिसे, मोर बच्चा किंतु बदमाश নহয়. मोर बच्चा घरत मोर আগত তিনটা চাৰিটা বেডৰুমৰ সম্মুখত কি কৰিছে আৰু সেই বাচ্চা স্কুলত গৈ কি কৰিছে তাৰ মাজত আকাশ পাতাল পাৰ্থক্য আৰু সেই চেহাৰাটো কিন্তু আমি দেখা নাই. As a parent also, you do not know how does his clinical condition change when given to various sensory organs. Many people, many smell, many perfumes of teachers, many colors, many voices, his motor skills becomes hyperactivated. যেনেকুৱাকে আমাৰ মহিলাসকল যেতিয়া মেখেলা চাদৰ কিনিব যায়, শাৰী কিনিব যায়, ইটো লাগে, হিটো লাগে, হিটো ভাল, হিটো নমাই দিয়কচোন. Same happens to the child also here. The motor skills changes. And while this motor skill changes, his reactivity element also changes. Class 2, class 3, class 4, class 5 onwards, the construction of his psychological architecture change ho jab. He is not the same guy as KG and class 1. As in KG and class 1, the constitutional area was lesser. The 42 কম asile, মানে 42 সৰু asile, বহল নাছিলে. এতিয়া লাহে লাহে যিমান ডাঙৰ হোৱা আৰম্ভ হৈছে, তাৰ brain functioning to ডাঙৰ হৈছে. And henceforth, there are few things I would request everybody to please put forth before you actually react. Dear parents, the first thing is the thought process. If I am in your place as a parent, I am also the same parent as my son goes to class 3 in the Don Bosco school. And I find the same problem, same trauma as you are feeling. I'm sure বহুত parents ভাবিছে বহি বহি লেকচাৰ দিয়া খুব সহজ, মোৰ নিচিনা বদমাস বাচ্চা ঘৰত থাকিলে গম পাব কিমান অত্যাচাৰ কৰে. I also do the same thing. That is understood because all our children are all the same age. They will do those things. The only basic difference is my education, my studies has been on a quite similar subject. Your might not as well happen. So parents, we will do the following things as required. Please introspect if it is basically possible or not. 8 years onwards, 8 বছৰ বয়সৰ পৰা আমাৰ বাচ্চাৰ মাজত punitive content আৰম্ভ হয়. Punitive content is punishment based content. ঠিক যেনেকুৱাকে মাক দেউতাকে punishment দিয়া আৰম্ভ কৰে বাচ্চাক, ঠিক সেনেকুৱাকে বাচ্চায়ো ৰিটালিয়েট কৰা আৰম্ভ কৰে. নামানো, নালাগে মোৰ অমুক বস্তুটো, দিবই লাগিব, কেতিয়াও নিদিও. See, the child and the parent becomes both in the clutches of child ego concept. মানে মাক দেউতাকে বাচ্চাৰ লগত বাচ্চাৰ নিচিনাকে ব্যৱহাৰ কৰা আৰম্ভ কৰি দিয়ে. মই আপোনাক কম, চাবচোন যেতিয়া আমাৰ মিটিংটো আৰম্ভ হয়, আমাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ কেয়টিক ইস্যুটো হ'ল গৈ বাচ্চাৰ কথাবোৰ মানুহে গম পাইছে. We as responsible parents, we should know আমাৰ 8 বছৰৰ বাচ্চা আৰু 8 বছৰৰ বাচ্চা মনে মনে বহাৰ কথা নহয়, হুলস্থুল কৰিব. We are supposed to know আমি বহিম কেনেকুৱাকে. We are supposed to know background কি থাকিব. We are supposed to know father দেখা পাইছে. We are supposed to know ঘৰত পিনা গেঞ্জিটো পিনি বহিম নে ভাল এটা শাৰ্ট পিনি বহিম. This is our perspective, not the child's. And very importantly, the child will learn, imitate all those punitive behavior from you. And hence, he will deliver the same back in the classrooms.
because ঘৰত তাৰ ৰিটালিয়েশ্যন কৰাৰ আৰু মানুহ নাই যদি ঘৰত এটা সৰু ভাই ভন্টি থাকে তেনেহলে আপুনি গম পাব কিমান দিগদাৰ হয় বাট আদাৰৱাইজ তাৰ এই খংবোৰ দেখুৱাৰ ৰাস্তাবোৰ হ'ল গৈ ক্লাছৰুম Now teachers, I'll tell you something. বহুত সময় দেখা গৈছে parents have said এই এটা ক্লাছত বদমাস বাচ্চা আছে x বাচ্চাটো এই x বাচ্চাটোৰ কাৰণে বাকি পাঁচটা বাচ্চা বদমাস হৈ গল এই কথাটো কোৱাৰ লগালগ you did not realize you are also pointing out a parents parenting also. Now এই parents parenting to লৈ আমাৰ problem আছিলে নে বাচ্চাটো লৈ আমাৰ problem that is the biggest question on social ecological environment. তামানে কি হল যেতিয়া জিটু মুহূৰ্তত আপুনি স্কুলত গৈ কমপ্লেইন কৰিলে বা সংযুক্তা ম্যাম এজ আ একাডেমিক কোঅৰ্ডিনেটৰ গৈ কমপ্লেইন কৰিব কি ম্যাম এই বাচ্চাটো ইমান বদমাস লেতেৰা কথা পাতে মোৰ বাচ্চাই শিকি আহিছে tell us one thing how is the coordinator going to help you out of these things and the second part is how do you think the academic council of people the group of people who are there would be able to handle would be able to সুধৰাবলৈ তেখেতসকলৰ contribution কেনেকুৱাকে হ'ব আমাৰ আৰু এটা ডিমান্ড আছে এজ এ পেৰেন্ট যদি স্কুলত ইমানখিনি বস্তু তেখেতসকলে চাব নোৱাৰে আমাৰ বাচ্চা পঠাই লাভ কি হ'ল প্লিজ বি ৰেসপন্সিবল পেৰেন্টস টিচাৰে কিন্তু বাচ্চাটোক মাত্ৰ 40 মিনিটস পায় ফৰ ওয়ান ক্লাস প্ৰত্যেক কেজন টিচাৰে কিন্তু মানে একজন টিচাৰে কিন্তু 6 ঘন্টা 7 ঘন্টা নাপায় আৰু প্ৰত্যেক কেজন টিচাৰৰ সাবজেক্ট বেলেগ প্ৰত্যেক এজন টিচাৰৰ এপ্ৰোচ টুৱাৰ্ডস দা বাচ্চা ইজ বেলেগ এপ্ৰোচ টুৱাৰ্ডস দা বাচ্চা মেলেগ মনে কোৱা নাই যে কোনবা খুব মৰম থকা মৰমিয়াল আৰু কোনবা খুব হিংস্ৰ মই হেবোৰ কথা ক'ব যোৱা নাই এপ্ৰোচ হ্যাপেন্স টুৱাৰ্ডস দা সাবজেক্ট কগনিশন 3 নম্বৰ হল গৈ এপ্ৰোচ টুৱাৰ্ডস দা টিচাৰ of all the students are also beleg aru ajir tarikot jeti ami class 3 aru class 4 kotha patisu these people psychomotor skills iman strong tekhethokolor seeds of adolescence somehow or the other keeps cropping from this age class 7 8 or jeti adolescence or khochatu maribo adolescence jeti pick up koribo they'll all have flashback memories mak deutakor nijor সম্পর্ক আশে পাশে সম্পর্ক কোনে বেয়া ব্যবহার করে কোনে ভাল ব্যবহার কৰিছিলে গটিখিনি কনস্টিটিউশন লৈ তাৰ ব্যবহার উলাই আহিব as you today I will ask you I'll need to ask you a question you don't have to answer me আজি আপুনি জি professional আছে জেনেকুৱাকে আপোনাৰ ব্যবহার it's not because of your family only it's because of your environment it's because of your colleagues it's because of your neighbors it's because of everybody who connects you আজি তারিখত পর্যন্ত we do not know how to handle ourselves আমার দেখুন মানে হাজবেন্ড ওয়াইফৰ মাজত যদি ঘৰত কিবা এটা ইনডিফারেন্স হয় আমাৰ ইমান খং উঠে আমি কেনেকৈ বিহেভ কৰো we don't realize that the child looks at us আৰু যদি দেউতাই মাৰ ওপৰত চিঞৰিছে বাচ্চাই গম পালে women respect কৰিব নালাগে তা মানে মহিলা disrespect কৰাটো আমাৰ মানে জনমসিদ্ধ অধিকাৰ দেউতাই কৰিছে মই কৰিম যদি মাই উল্টাই গালি দিছে দেউতাক তেনেহলে the girl will understand oh it's easy to be a powerful wife and a dominating husband so that's how gender biased behavior bur ahi jay jar karone parents I would request everybody to be very careful about your conduct at home right from class 3 and class 4 are your conduct issues etia prottek ejon parents e kobo ami jano ki koribo lage ami notun bostu শিকিব নালাগিলে because মই কোনো নতুন বস্তু কোৱাও নাই যদি হসাকে আপুনি জানে তেনেহলে স্কুলৰ ক্লাসৰুম এটমস্ফিয়াৰ টু আপ টু দা মার্ক কেলে নহয় because we are different people because we will have different social values we will have different moral values আৰু প্ৰত্যেক এটা জায়গাত the বাচ্চা is an outcome of your upbringing আপুনি জি কৰে জি নকৰে কেলে বাচ্চা তাৰ রিফ্লেকশন টু হে হয় I'll tell you about human psychology and human behavior. এই যে আমি কথা পাতো কাপোৰ পিন্ধু বহু আমাৰ হাতৰ মুভমেন্ট বডি মুভমেন্ট এই বস্তুবোৰ কৰ পৰা আহিছে because of imitation আমি ইমিটেট কৰিছো সৰুৰ পৰা আমি বস্তুবোৰ ইমিটেট কৰিছো আমাক যেতিয়া সৰু যেতিয়া আছিল আমাক শিকাইছিলে এই ভাতটো এনেকুৱাকে লবি আৰু এনেকুৱাকে মুখত দিবি টেবিলৰ বাহিৰত জন্য পৰে থালিৰ বাহিৰত জন্য পৰে and the same we are doing it right now yes or no please nod yes or no then understand the child is also watching all your movements also মোৰ দেউতাই ঘৰত সিগাৰেট খায় তাৰমানে সিগাৰেট খাওয়া is not bad so I can also smoke because parents are the supreme authority of a child's learning principle বাচ্চাই বেলেগৰ পৰা যিকোনো বস্তু শিকক নিশিকক তাৰ কাৰণে তাৰ parents are more than god মোৰ মা ভুল হ'ব নোৱাৰে মোৰ দেউতা ভুল হ'ব নোৱাৰে আজিও চাব ফ্যামিলিত যেতিয়া কাজিয়া লাগে ওয়াইফে প্ৰথমতে কব মোৰ দেউতা এনেকুৱাকে নাছিলে তুমি অদ্ভুত ধৰণৰ বেয়া ব্যৱহাৰ কৰা so you keep comparing with your husband
আৰু ওয়াইফে যেতিয়া বেয়া খানা বনায় আগতে হাজবেন্ডে কয় মোৰ মাইটো ইমান ভাল খানা বনাইছিলে তুমি শিকিব পৰা নাই so this is life. So you have been doing the same thing till now. Don't you think you have to be role models for your children? Jar karone we have to be very careful about our conduct. How do we conduct ourselves? Psychomotor skills develop for logalog a pandemic or khetrot I'll tell you what the beautiful thing has happened unnoticeably. Sabo ami kiman stage cross korisu 22 tarikhe jetia janta curfew dise amar olop bhal lagise janta curfew dise thali bajabo dise saki jolabo dise clap bajabo dise ami video korisu sob thik thak asile video kori ami nation ekeloge ase hope post ahisile jetia 21 dinor lockdown announce korisile Narendra Modi. Do you remember you are about to have a heart attack moto mori gosilu satya nas 21 din ghorot thakim kenekwa আৰু 21 দিন থাকাৰ পিছত বহুত মানুহে আৰম্ভ কৰিছিলে লকডাউনত নতুন বস্তু শিকিম পেইন্টিং কৰিম অমুক কৰিম তমুক কৰিম 21 দিনৰ পিছত যেতিয়া আকৌ লকডাউন দিছে তেতিয়া আমি মূৰত হাত দিছো হে ভগৱান আমাৰ জিন্দগী গল আমি আৰু কেতিয়াও মানুহ সিভিলাইজেশনত থাকে নাহিম এই কৰি চাওক 60 দিন উলাই গল আৰু তাৰ পিছত আৰু আছিলে কৰোনাৰ নিউজ মানে ফেসবুকটো খুলিলে 32 পজিটিভ 89 পজিটিভ আমাৰ আতংক হৈ গৈছিল আৰু আজিৰ তাৰিখত believe me I'm talking sense or not আজিৰ তাৰিখত আপুনি কিন্তু ডিসাইড কৰিছে নিউজ আৰু নাচাও ফেসবুকত আৰু স্কোৰ নাচাও because I know I have to live with corona. Imagine news channel or নিউজবোৰৰ এংকাৰবোৰৰ মুখৰ সাউনিবোৰ কেনেকুৱা আছিল পিছফালৰ মিউজিকবোৰ কেনেকুৱা আছিল তাইক চালে দেখোন মই ঘৰত মৰি থাকিলো হেতেন that was the dangerous part of the news. But today you will see আজি corona সাংঘাতিক বাঢ়িছে. Remember যেদিনা প্ৰথম কেস আহিছিলে শিলচৰৰ মানুহজন যেতিয়া করোনা আহিছিলে করোনা অহমাহি পালে করোনা আজি যেতিয়া 1300 1400 করোনা আহিছে আমি জানো একো নালাগে আজি তো মোৰ অহা সানডে বিয়াৰ নিমন্ত্ৰণ আছে মানুহে বিয়াও পাতি পেলাইছে so we are okay with it right now. So we have changed our comfort zones in accordance with the changing landscapes of ecology. Amar bachcha ketaও একে So we have to be very, very careful about the systematic syndromatic approach towards your children. Problems were kenekwa hoy parents, I'll tell you. Amar prothom problem to hol goi bachcha school pra hi complain korise muk aji teacher marise loga log mai kose tu teacher marire kele ohobbo teacher tuk sale lage je teacher to ohobbo asile moi kali goi teacher ok dhulai dim. So the next day the mother reaches the college. So the mother reaches the school aru mai kobo apuni mor bachchak marile kele apunar bachcha omuk korise tomuk korise bachcha kintu majot gom pale je mur teacher to villain mur ma is heroine mur mai muk bosai dibo and in the long run the mother is becoming the biggest villain vamp of his life. Teacher kintu kedinman pisot erio dibo ei jonik jodi gali diu make ahi besi sior kore ja nalage to ji kor por goi. Imagine what your child is bringing out from the school. Your child is blessed jodi schoolot mar khaise jodi schoolot punishment khaise he is or she is been corrected dangor hoi tar lora soliko kahani kobo paribo je moi catholic schoolot asilu aru mor eta khanghatik tera teacher asile Sandra memor nisna heavy mar disile. They should have stories, otherwise dekhun kahani e nai mur kiba ta hol tar agot mor deuta goi pabo mur kiba ta hol mor make goi pabo. Imagine your childhood. Aponloke school jetia class 2 3 asile sahok asile niki schoolor teacher complain koribo hi mak detua kotate ami jetia khudisilu mai omuke muk marise prothom question toy ki korisili amar ajikali parent kintu etu nokoy amar ajikali parent hol go janu maktuo bodmas bachchatuo bodmas bonaise mur bachchatuk mari dise. Understand the wrong nurturing we are doing to our children. Each and every moment that we train our children to be wrong human beings. আমি বিয়াত খাব গৈছো বিয়াৰ পাৰ্টিত গৈছো বাচ্চাৰ লগত বিয়াৰ পাৰ্টি খাই থাকোতে কিন্তু আমি কৈছো ইমান বেয়া খুৱাইছে আজিকালি কিন্তু ইমান বেয়া বুফে নুখুৱাই ডেজার্ট টু ইমান বেয়া ইমান থার্ড ক্লাস অমুকৰ বিয়াত কিন্তু ভাল বস্তু আছিল. So your child knows not to appreciate a meal. Your child has learned these things. আমি কিন্তু জানিব লাগিব আপোনাৰ যিমান বদনাম কৰিব লগা আছে মও মানুহৰ বদনাম কৰি খুব ভাল পাও পিছত কৰিম বাচ্চাৰ আগত নহয় বাচ্চাই গম পাবতো. আটাইতকে বেয়া বস্তুটো কি হল আমি চাও when we go to funerals কোনোবা ঘৰত মানুহ মৰি গৈছে আমি শ্ৰাদ্ধ খাব গৈছো আমি শ্ৰাদ্ধ খাইছো মানুহজন মৰি গৈছে তাৰ কাৰণে তাকো কিন্তু খাই আমি গাড়ীত বহি বদনাম কৰিছো
সাপোজ আমি যেতিয়া এটা বাচ্চাৰ বাৰ্থডে নিমন্ত্ৰণ আহে আমাৰ তাত আমি যেতিয়া এটা গিফট কিনিব যাওঁ আমি দোকানত গৈ কওঁ 300 টকাৰ ভিতৰত দেখাব দোকানদাৰে কৈছে 375 টকা 375 rupees আপুনি কৈছে নাই এই মাহত বহুত গিফট দিব লগা হৈছে 300 টকাৰ ভিতৰতে কিবা এটা দেখাও এই যে কথাবোৰ আপুনি কৈছে বাচ্চাই কিন্তু ইমিটেট কৰিছে and the bacha will carry the moral values as such কালি যদি বাচ্চাই আপোনাক বেয়াকে ৰিটালিয়েট কৰে you cannot shout and say mind your language আজি কোৱা নাই that I have learned this language from you কালি ৰাতিপুৱা ক'ব নহয় গোটেইখিনি বস্তু আপোনাৰ পৰাই শিকিছো so this is very very important আৰু টিচাৰ আৰু পেৰেন্টস I'll tell you something আমি যদি হসাকে বাচ্চাহঁতক খুব ভাল নাৰ্চাৰ কৰিব লগা পাৰিলো হেতেন মানে if we were doing correct things as of now আমাৰ ৰাজ্যত যে ওল্ড এজ হোম হোৱা আৰম্ভ হৈছে হেতু নহল হেতেন আমাৰ ৰাজ্যত কিন্তু সাংঘাতিক ওল্ড এজ হোম আছে লাষ্ট মোমেন্টত কিন্তু মাক দেউতাকক চোৱা নাই বাচ্চাই এৰি গৈছে so you will have a sensitivity towards the outcome what is coming up next so parents I would sincerely request everybody to understand these following tips if it is of help to you number 1 the first tip is class 3 class 4 er bachchar kintu pronunciation strong hoise etia class 2 er nisnake aru asposto pronunciation nohoy etia pronunciation is much more stronger much more crisp to make him read aloud olop jure poribo dibo so that the pronunciations are self audible monta se ami horu thakote je jure jure porisilu he system to ajikali nuhua hoy goise আৰু তাতকেও ডাঙৰ প্ৰবলেম হল গৈ আমাৰ যৌথ পৰিয়াল আছিল আমাৰ ঘৰত আইতা আছিল ককায়েক আছিল we had grandparents আজিৰ তাৰিখত grandparents নাই আমাৰ নিউক্লিয়াৰ ফ্যামিলি বাচ্চা জন্ম হোৱাৰ লগালগ হস্পিটেলত আমি বহি ভাবো মোৰ একমাত্ৰ লৰা মই তাক আইএএস অফিচাৰ বনাম এই ৰিক্সাৱালা হোৱাৰো তাৰ ক্ষমতা আছে না আমি নিজেও গম পোৱা নাই so we need to be very careful about the not constituent elements but about the prolificity but about one second please give me a moment's time but about the prolificity of the child that we need to nurture within the children these things are much more important jar karone jure jure porhar logalog we need to make them read storybooks eta homoy asile birthday gifts were only storybooks and comics ajir tarikot kuno manu jodi kitab diye logalog bachcha doli mari pelai diye kam nai third class gift dise eta bhal gift anibo noare aru loi ahise storybook eta etu kune poribo so we have not taught our children how to read storybooks মই ইমান বুঢ়া হৈ গলো আজি তাৰিখতো মোৰ মানে ফেভাৰিট কমিক্স হল গৈ টিংকল এণ্ড সুপন্ডি এণ্ড দোজ ক্যাৰেক্টাৰ্স যাৰ লগত আমি ডাঙৰ হৈছো teach parents we have to be more careful about nurturing the child with reading the art of reading should be there within the child that's very important দুই নম্বৰ very important thing the thumb rule of a child's nurturing আমাৰ pandemicত soft আমাৰ pandemicৰ main classes হৈছে অনলাইনত online classes amar kintu 24 ghonta hua nai minimum 2 ghonta hoise 3 ghonta hoise tar pisor the child should not have an access to the mobile phone tar pisor access to the mobile phone for games or other things that the child has to do tar karone you need to set fixed routines abeli 6টাৰ পৰা 6:30 লৈ 6:30 পৰা 7:30 লৈ মোবাইল পাবা তাৰ পিছতো নহয় তাৰ আগতো নহয় লাইক স্কুল ডিসিপ্লিন যদি আজি নকৰে আজিৰ পৰা 5 বছৰ 7 বছৰ পিছত আকো মোৰ নিচিনা সাইকোথেৰাপিষ্ট এটা আহিব আৰু ক'ব মোৰ বাচ্চা মোবাইল নেৰে আপুনি মোবাইলটো হাতৰ পৰা এৰাওক ৰাতি 2টা লৈ 3টা লৈ বাচ্চাই কিন্তু কনস্ট্যান্টলি মোবাইলত সময় কটাইছে আমি সবে জানো গুৱাহাটীৰ নিচিনা এটা সৰু জায়গাত পৰ্যন্ত পাবজি খেলিব দিয়া নাই কাৰণে ক্লাস 9 ৰ ষ্টুডেন্টৱে কি কৰিছিলে মই এটো ৰিপিট কৰিব বিচাৰা নাই বাচ্চাহঁতে কথাবোৰ শুনি আছে কাৰণে সো ইউ আন্ডাৰস্ট্যান্ড পাবজি খেলিব দিয়া নাই কাৰণে কিন্তু বাচ্চাই নিজৰ লাইফ লৈ গৈছিলে সো ইউ নিড টু বি প্ৰোঅ্যাক্টিভ ফ্ৰম ৰাইট নাও আৰু আমাৰ প্ৰবলেমটো কি হৈছে আমাৰ পেশেন্স লেভেল দিন to din কমি আহিছে সাবো আপোনাৰ ঘৰত যেতিয়া আলহী আহে আপুনি জৰুৰী এটা কথা পাতিব বিচাৰিছে তেতিয়াই বাচ্চা আহি কব মোবাইলটো দিয়া তো তাক চুপচাপ কৰাৰ কাৰণে তাৰ হাতত মই মোবাইলটো দি দিও বাহিৰত কবাত গলে লগালগ কব মোৰ মোবাইলটো লাগে তেতিয়া মোবাইলটো দি দিও আপুনি সিনেমা হলত যাব সিনেমা দেখিবলৈ সিনেমা চাবলৈ তেতিয়াও কিন্তু ডাঙৰ এটা লৰা ক্লাস 3 বা ক্লাস 4 তেতিয়া কব মোবাইলটো লাগে চুপ থাক কোৱাৰ কাৰণে আমি মোবাইলটো দি দিছো the child knows how to rule you the child knows how to dominate you leave meeting আৰু খুব ভাল চিন্তা কৰি চাবো আজি তাৰিখত the child is you are not nurturing the child is making you dance according to his own tunes
বাচ্চাটোৱে নচাইছে আপোনালোকক অমুক বস্তুটো লাগিবই লাগিব তমুক বস্তুটো লাগিবই লাগিব এই হল গৈ সেকেন্ড ইস্যু আমি বাচ্চাক ৰিডিং এলিমেন্টস দিয়া নাই থাৰ্ড এলিমেন্ট কোৱা হৈছে এসেনশিয়াল স্কিল অফ আ চাইল্ড এসেনশিয়াল স্কিল অফ আ চাইল্ড মানে আপোনাৰ মানে আপোনাক মই কওঁ বাচ্চাই ষ্টৰীবুক কেলে নপঢ়ে তাৰ কাৰণ হল গৈ আপুনিও নপঢ়ে নহয় ঘৰত আপুনিও আপোনাৰ হাতত এটা ম্যাগাজিন নাই আপোনাৰ হাতত এটা নিউজ পেপাৰ নাই বাচ্চাও পঢ়া নাই সাপোজ এটা ডাইনিং টেবুলত মা দেউতা খানা খাই আছে দুজনে মোবাইলটো খুচুৰি আছে বাচ্চা বিচৰা কি কৰিব ডাইনিং টেবুলত বহি যে আমাৰ এটা আড্ডা আছিল মাৰ লগত দেউতাৰ লগত আজিকালি নাই নহয় ফটাফট খা আৰু শুব যা ৰাতিপুৱা স্কুল আছে 7টা বজাত উঠিব লাগিব so this is one problem that we have been doing আমি রুটিন বনোৱা নাই আমি রুটিন একেবারে বনোৱা নাই তাৰে মাজত সোশ্যাল গ্যাদারিংস থাকে তাৰে মাজত আলহী আহে so everywhere I have seen the mothers are worstly suffered মানে বেয়াকে mothers are suffering fathers or contribution to becomes a volatile role right now আমি কিন্তু খুব বারবারকে দেখাব দিব লাগিব আমাৰ লৰা ছোৱালী কেইটাক that even the father also loves the mother father also equates the mother's hard work the father also helps the mother in the kitchen আমি খদাই বাচ্চাটোক দেখাইছো যে ৰাতি আবেলি টায়াৰ্ড হৈ দেউতা আহিলে দেউতাৰ কাৰণে মায়ে চাহ লৈ যায় কিন্তু আমি এদিনও দেখুৱা নাই যে দেউতা অহাৰ পিছত দেউতাই কৈছে তুমি বহা মই চাহ বনাই আহো আমি দুজনে একেলগে চাহ খাম এই বস্তুটো যদি আমি কৰিব পৰা নহও আমাৰ বাচ্চা will not know there is a mutual respect between the parents they do not know your relationship they need to know your cohesive relationship and that's how their ecology is born এই বস্তুবোৰ নোহোৱা হলে the bacha becomes attacker সদায় অ্যাটাক কৰিব মই অমুক বস্তুটো নাপালো মই তমুক বস্তুটো নাপালো he will never know gratefulness he will not be able to আপুনি কওকচোন আজিৰ তাৰিখত খোৱাৰ আগত প্ৰেয়াৰ কৰা ৰাতিপুৱা before we go to sleep প্ৰেয়াৰ কৰা আমি শিকাইছো জানো যদি শিকাইছো we are doing the right thing যদি আমি শিকোৱা নাই they'll not know patience স্কুলৰ 40 minutes or meditation classত breathing technique শিকিলে যদি বাচ্চাৰ পেশেন্স আহিলে হেতেন তেনেহলে মাক দেউতাকৰ দৰকাৰ নাছিলে we needed to be very very sensitive here in your strategies this is the third thing second whole going the child has to involve in physical exercises and physical games lockdown hole বাচ্চাৰে কো কৰিব লগা নাই আমি ঘৰত কিমানখিনি দৌৰাদৌৰি কৰিছো হাইড এন্ড সিক খেলিম টেৰেছত যাম আমাৰ নিজৰ যিমান লিমিটেশনস আছে তাৰে মাজত আমাৰ যিমান লিমিটেশনস আছে তাৰে মাজত we have to make our children agile physical agility নাথাকিলে mental agility কেতিয়াও নাহিব your bacha will never be able to grab new things bacha will never be able to grab new things আৰু যিমান বাৰ আমি ফিজিক্যাল এক্সারসাইজৰ কথা কৈছো হিমান বাৰ আমাৰ তাত এটা ইস্যু আহিছে আমাৰ জায়গা কম আমাৰ বাহিৰত জায়গা নাছিলে আমি অমুক বস্তু কৰিব পৰা নাই আমি ঘৰত যে জগিংও কৰা নাই আমি ঘৰত যে ওয়ার্ম আপও কৰা নাই সেই বস্তুবোৰ লৈ আমাৰ কথা পাতিব লাগিব these are very important things that हम लोग को नजर देना पड़ेगा आज नजर नहीं देगा अगले साल से करेगा बच्चा तब तक अगला उम्र में चला जाएगा नया उम्र में गया तो उसके पास में नया स्किल आएगा पुराना स्किल साथ में नया दिगदारी वाला सामान लेके पैदा होगा तब उसको संभालना बहुत मुश्किल क्लास 3 में अगर हम लोग इसको नहीं संभाला तो क्लास 3 का दिक्कतें को लेके वो क्लास 4 में पहुंचेगा क्लास 4 का एडिशनल दिक्कत है फिर क्लास 3 का दिक्कत भी है आपके पास में डबल मुसीबत फिर आपको लगेगा ये बच्चा ऐसा बदमाश कैसे पैदा हो गया पैदा तो आप ही की वजह से हुआ है यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट एंड सबसे जरूरी बात द बच्चा हैज बीन बोर्न बाय डिफॉल्ट अकॉर्डिंग टू द बायोलॉजिकल डिफॉल्ट आप उसका माता पिता है लेकिन वो बच्चा आपके लिए पैदा नहीं हुआ he has got universal power his powers has to be contributed to the universe his powers has to be हम लोग का सबसे देखिए I'll tell you as a parent हम लोग कितना गलत काम किया हम लोग बच्चा को बचपन से एक ही सवाल किया तुम बड़ा होके क्या बनेगा मैं बड़ा होके ना डॉक्टर बनूंगा फिर तुम बड़ा होके क्या बनेगा मैं बड़ा होके इंजीनियर बनूंगा आईएएस ऑफिसर बनूंगा हम लोगों ने उसका दिमाग में ना नौकर बनने का तरीका घुसा दिया है उसको एक नौकर बनना है उसको एक नौकरी करना है उसको पैसा निकालना है उससे इकोनॉमिक जनरेशन आएगा वी हैव नेवर आस्क्ड आवर चिल्ड्रन तुमको क्या करना पसंद है और जो भी चीज करना पसंद है उससे आप दुनिया में कंट्रीब्यूट कैसे करोगे हाउ डू यू थिंक यू विल वांट टू शेयर योर नॉलेज टू द वर्ल्ड पापा ये काम करते हैं तो समाज में हम लोग ये काम करते हैं आप क्या करना चाहते हो
बच्चा बोलेगा मुझे ना पेंटिंग करना है, मैं पेंटर बनूंगा। माँ सबसे बोलेगा मार के थप्पड़ गाल तोड़ दूंगा, पेंटर बनना है, पैसा रोजगार नहीं करेगा, पढ़ाई कर। सो वी हैव किल्ड द चाइल्ड्स टैलेंट, वी हैव किल्ड द चाइल्ड्स टैलेंट। फिर पापा बोलेगा अभी अगर इसको नहीं समझाएगा तो समझाएगा कब? बेचारे को दुनिया में आया हुआ 8 साल, कुछ तो देखा ही नहीं है। 8 साल में उसको अगर दुनियादारी इतना दिखा देंगे तो अगली बार आगे जाके वो सोचेगा क्या, करेगा क्या? लेट हिम ब्रीथ। 8 साल में उसको कितना क्लासेस पढ़ा दिया आपने? 8 क्लासेस में 3-3 4-4 असेसमेंट्स कराया साल में। 8 साल में कितना पेरेंट्स ने कितना छापड़ मारा उसको। 8 साल में कितना टीचर्स ने कंप्लेंट डाला उसके ऊपर में। 8 साल में कितना बार आप डायरी में लिख के भेजा कंप्लेंट्स को और घर में आके उसको हुलस्थुल किया। फोन कर करके हम लोगों को बोलते हैं मेरा बच्चा बिगड़ गया, टीचर्स ने कंप्लेन किया, टीचर ने कंप्लेन किया, देखो मेरा बच्चा क्या बिगड़ गया। 8 साल में उसने बहुत मुसीबत झेला, जितना मुसीबत आपने अपना 8 साल में नहीं झेला था। फिर पेरेंट्स बोलते हैं हमारा समय में इतना बड़ा मुश्किल नहीं था, आजकल पढ़ाई लिखाई बहुत कंपटीशन हो गया। सही बात है क्या? 8 साल का पढ़ाई लिखाई का कंपटीशन में कौन सा आगे बढ़ जाएगा बच्चा? आज बच्चा फर्स्ट हो गया, आज बच्चा सेकंड हो गया, तो कौन सा बड़ा चीज हो गया? और सबसे बड़ा बात है पेरेंट्स का पेरेंट्स के साथ में कंपटीशन। আপনার ছোৱালীয়ে কিমান পাইছে एनवायरमेंटल स्टडीज और 45 पाइसे, मूर्जनीय 48 पाइसे। अब लग गया दोनों पेरेंट्स में मन मुटाव। उस पेरेंट का शक्ल दिखने से इस पेरेंट को झगड़ा लग जाएगा क्योंकि उसका बच्चा को ज्यादा मार्क्स मिला, मेरा बच्चा को कम मार्क्स मिला। अब ले यहाँ पे प्रॉब्लम। फिर हम लोग घर पे भी बोलते हैं उससे ज्यादा बात मत करना, तुम अपना पढ़ाई में ध्यान दो। तो बच्चा को हम लोगों ने अद्भुत जानवर बनाया घर पे। फिर उसके बाद में बच्चा स्कूल में जाके कोप अप नहीं कर पाया। प्रॉब्लम किसका हुआ था? सिखाया किसने था? आप जब टिफिन पैक करके उसको देते हो, बार बार बोलते हो खुद खा के आना, क्लास में किसी और को खिला के मत आना। बहुत मेहनत से सुबह सुबह उठ के टिफिन बनाना पड़ता है। सो बच्चा को पता चलता है आई डोंट हैव टू शेयर माई थिंग्स। आज सुबह बैग में मैंने 2 पेंसिल डाला था, एक पेंसिल लौट के आया, दूसरा पेंसिल कहां गया? मेरे दोस्त के पास में पेंसिल नहीं था, मैंने उसको दे के आ गया। उसके पास में पेंसिल नहीं था, तूने वो पेंसिल उसको क्यों दे दिया? नहीं था तो नहीं था, अपना चीज अपने आप को घर में रख के आना चाहिए था ना। फिर हम लोगों ने बच्चा को कॉम्पैशनेट नहीं बनाया। हम लोगों ने अपना तरीके से बच्चा को एक ऐसा ढांचे में डाला, कल जाके वही रिप्रोडक्शन आपके सामने में वो करेगा। रिप्रोडक्शन ऑफ थॉट्स, रिप्रोडक्शन ऑफ एलिमेंट्स। तब जाके अगर आप बोलेंगे ये बच्चा ऐसा क्यों हो गया, स्कूल का उसमें कोई भी हाथ नहीं था। स्कूल का टीचर का सिर्फ 40 मिनट का साथ था आपके बच्चों के साथ, एक पीरियड का साथ। और एक पीरियड में टीचर ने सिलेबस का टॉपिक पढ़ाया है, बच्चा को नैतिक ज्ञान नहीं दिया, लॉजिक नहीं दिखाया, मॉरल वैल्यूज नहीं दिखाया। आज बगल वाला घर में पूजा है, हम दोनों को बुलाया है, जाएंगे क्या? मम्मी ने पूछा, पापा बोलेगा ये इन सब में मुझे नहीं जाना, तुम जाके आ जाओ, मैं नहीं जाता। बच्चा को पता चला पूजा इज सेकेंडरी, पूजा इज टर्शियरी, और सोशलाइजेशन करना भी नहीं चाहिए था। आया हमारा देश में सोशल डिस्टेंसिंग, देखिए कितना दिन तक रहता है सोशल डिस्टेंसिंग, सब जाएगा। हम लोग भारतवर्ष के हैं, वी आर इंडियंस एंड वी विल ओवरकम दैट आल्सो। डिस्टेंसिंग डिस्टेंसिंग कुछ नहीं आता। नाक में तो मास्क डाल के भीड़ बस में लोग एक दूसरे के ऊपर में चढ़ रहे हैं, किस चीज का डिस्टेंसिंग? और ये भारतवर्ष ऐसे ही रहेगा। बोला थूकना मना है, हम लोग थूक रहे हैं, देख देख के बोलते हैं अरे इससे कोरोना निकल के आ जाएगा, ये थूक रहा है। हम लोग कितना बार थूका उसका तो रिकॉर्डिंग नहीं हुआ, हम लोग अभी तो है ना ये सब चीज। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी सेंसिटिव बिफोर वी वांट our children to be speak and span. ऐसा मुमकिन नहीं है कि आपका बच्चा is absolutely correct because you have been absolutely correct. We are human beings, हम लोग इंसान हैं और we have a right to do mistakes. लेकिन bigger problem is parents do not have the liberty to do the mistakes. गलती पेरेंट्स ने किया, बच्चा पकड़ेगा। मेरा पापा कर सकते तो मैं भी कर सकता हूं, मेरे मम्मी कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। These are problems that we are going to face. The most important element, parents, please mind your language at home. आप अपना भाषा के ऊपर में बहुत ज्यादा नियंत्रण रखिए। हम लोग को बहुत ज्यादा गुस्सा उठने से कोई भी किस्म का चीज जैसे भी हम लोग बोलते हैं, the child understands this is parliamentary language, यही बोलना चाहिए। और बच्चा स्कूल में जाके वही चीज बोलेगा, बच्चा वही चीज बोलेगा। अब खाली पेरेंट्स से नहीं आया, अब ये कार्टून कैरेक्टर से आने लगेंगे, टेलीविजन से आने लगेंगे। आप अगर मोबाइल स्क्रॉल करेंगे, न्यूज फीड में ऐसे अजीबोगरीब चीज आ जाएगा पॉप आउट होके, बच्चा देखेगा तो उसमें मुश्किल। आप किस हद तक इस चीज को आप रोक सकते हैं?
तो नहीं रोक के वी हैव टू डेवलप आवरसेल्फ टू स्पीक ऑन द करेक्ट लैंग्वेज ऑन द करेक्ट सब्जेक्ट, बिकॉज बच्चा के पास में आज गूगल है। कुछ दिन पहले मेरा बेटा आया, आके एक गंदा सा गाली स्कूल से सीख के आके बोला इसका मतलब क्या होता है, क्या गाली अभी मैं नहीं बोल रहा हूं यहाँ पे, एक गाली सीख के आके बोला ये गाली का मतलब, ये शब्द का मतलब क्या होता है। मैं बोला मैंने तो जिंदगी में नहीं सुना। जब तक मैंने बोला मैंने जिंदगी में नहीं सुना, तब तक मुझे लगा मेरा तो पूरा खानदान भ्रष्ट, क्योंकि पूरा नाक कान काट के आ जाएगा। फिर उसने बोला आपको नहीं पता कि इसका मतलब, मैं बोला नहीं। बोलते मैं गूगल सर्च कर लेता हूं। अब गूगल में सर्च करेगा तो निकल भी तो जाएगा, तब आप क्या करेंगे। तो इतना आसान नहीं है। तो देयर आर सो मेनी वेज दैट यू नीड टू पुट अप। अब उसने ये शब्द सीख के आया जो शब्द एफ से शुरू होता है और के से खत्म होता है, और वो फेसबुक नहीं है, कुछ और चीज है ना। फिर मैंने बोला द वर्ड इज नॉट दिस, द वर्ड इज हैक, HECK। उसको देखो, शायद कुछ नहीं होने से ना अचानक से डिस्गस्ट होके लोग बोलते हैं व्हाट द हैक, व्हाट द हैक, तो ये शायद बोला होगा। बोला अच्छा ठीक है। तो हैक का मतलब ढूंढा गया है गूगल में, फिर हैक का मतलब निकला है साबोटाज, ट्रिवियल साबोटाज हो गया, बर्बाद हो गया। तो उसको समझ में आया ये साबोटाज है। ये तो एक शब्द मुझे पता था, एज ए ट्रेनर मैंने ऐसा हैंडल किया है। मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल का बच्चा क्लास 3 में ये एफ और के वाला शब्द सीख के जाएंगे क्लासरूम में बैठ के, और फिर क्लासरूम में जब ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, शेयर किया जाएगा, एक एक एलिमेंट आपका घर में भी आएगा। तब आप जाएंगे स्कूल में पूछने के लिए कि मेरा बच्चा ने ये गंदा शब्द कहां से सीखा। टीचर बोलेगा मुझे क्या पता, मेरा तो टॉपिक में भी नहीं था, मैं कैसे बताऊं, मैं कैसे बोलूं, मैंने थोड़ी सिखाया है। अब मैं आपको एक मजेदार बात सुनाता हूं। कुछ दिन पहले क्या हुआ, आई हैड हर्ड समबडी, एक बच्चा क्लास 1 या क्लास 2 में एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन याद कर रहा है, मतलब पढ़ाई कर रहा है। तो पढ़ाई करते करते वो पढ़ाई कर रहा है, बोल रहा है 10 + 2 the son of a bitch is 12, 10 + 3 the son of a bitch is 13, 10 + 4 the son of a bitch is 14। उसका माँ ने बोला तुमको कौन सिखाया, बोलते टीचर ने सिखाया। बोलते टीचर ने ये बोला तुमको, बोला हाँ। तो अगले दिन माँ गई स्कूल में, तो स्कूल में गया तो माँ ने पूछा टीचर ये क्या बोल रहा है, बोलता नहीं पता। बोलते son of a 10 + 2 the son of a bitch is 12, 10 + 3 the son of a bitch is 13। बोलते son of a bitch तो नहीं बोला, मैंने बोला the sum of which is 12, the sum of which is 13। बच्चा ने सुना the son of a bitch is that। तो ये सब का चीज हमारा घर में भी आने लगेंगे। जब एक बार आ जाएगा हमको लगेगा कि ये बच्चा स्कूल से सीख के आया। पेरेंट्स जरा ठंडा दिमाग से सोच के बताइए, सेंट फ्रांसिस स्कूल नारंगी के टीचर्स और प्रिंसिपल का एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन में गंदा चीज सिखाने का कोई सिस्टम है क्या कि 5th पीरियड या 6th पीरियड में बच्चा को मेल न्यूट्रिशन दिया जाएगा, गलत चीज सिखाया जाएगा? ऐसा कुछ भी नहीं। हमको प्रॉब्लम क्या है, द बिगर प्रॉब्लम इज वी ऑल प्रेजेंट इन द कंप्यूटर हियर टुडे आर द कंट्रीब्यूटरी एलिमेंट्स ऑफ आवर क्लासरूम्स। हम लोगों के वजह से वो क्लासरूम पैदा हुआ, आपका बच्चा का बिहेवियरल पैटर्न से नहीं। योर बच्चा इज द रिफ्लेक्शन ऑफ योर बिहेवियर। तब जाके जब बोलेंगे आपका बच्चा खराब, प्लीज पॉइंट आउट टू योरसेल्फ आल्सो, आपने ही भेजा, आपके वजह से ही आया। मेरा बात सुनने से लगेगा मैं तो पेरेंट्स का धुलाई कर रहा हूं यहाँ पे, but the problem is this कि as a parent we can correct ourselves, we cannot correct our children because they are very very young। I will have very less amount of time। I think father ने मुझे 40 मिनट का टाइम दिया है, पता नहीं मैं बहुत ज्यादा टाइम ले लिया होगा। और एक चीज मैं आपको बता के जाता हूँ before I leave, your child should have routines at home। जैसे स्कूल का रूटीन्स वैसे घर का रूटीन होना बहुत जरूरी है। जैसे आपके घर में डिनर दिया जाता है रात को 9 बजे, आज गेस्ट आ गए तो आज डिनर हो रहा है रात को 11 बजे, कल गेस्ट के अड्डा ज्यादा बढ़ गए तो कल का डिनर हो रहा है 12 बजे। द चाइल्ड अंडरस्टैंड्स द डिसिप्लिन ब्रेकिंग फैक्टर्स। आज लॉकडाउन के क्षेत्र में मुझे सचमुच दिल पे हाथ देके बताइए कि सुबह 7 बजे जैसे बच्चा स्कूल जाता था, वैसे आज के तारीख में बच्चा सुबह 6 बजे नींद से उठ जाता है क्या? हम माँ बाप के हिसाब से बोलते नहीं जाता है, तो कल जब स्कूल खुलेगा उसके साथ में तो आपका महाभारत शुरू होगा, खींच के मतलब बिस्तर से निकलना पड़ेगा। डिसिप्लिन हम लोगों ने तोड़ा। और इंपॉर्टेंट चीज बिफोर आई लीव, आपका बच्चा पैदा होने के बाद आज तक ऐसा इनडिसिप्लिन फेज नहीं आया जितना इस बार आया है। आपने जब उसको 2.5 साल 3 साल 3.5 साल था तभी भी ढकेल के आपने स्कूल भेज दिया था, तब से वो स्कूल जाने का टाइमिंग का डिसिप्लिन फ्रैगमेंट में था। यही 2 महीना 4 महीना आया है जहां पे द चाइल्ड इज
indisciplined now, and that too because of you. Please wake him up at early in the morning at 6 o'clock. Please make him have his breakfast on time. Please make him sit in front of the things as in how the classroom is happening, as if the class is happening. Please make him sleep in the afternoon as a power nap. Otherwise, बच्चा शाम को दिक्कत करेगा. The way the school days has it happened, the same way you need to nurture today. Otherwise, tomorrow would be very, very difficult. Otherwise, tomorrow आपको पता भी नहीं चल. Friends, I am trying to tell you one thing. 1918 के बाद में हमारा देश में पेंडेमिक नहीं हुआ था. 102 साल के बाद में हमारा जिंदगी में लॉकडाउन आया है, और ये लॉकडाउन ने हमें वापस सिविलाइजेशन से दूर हटा दिया है. We have come down to the basics. Now it's very high time that you need to keep on having pace with the lockdown and the quarantines your child is suffering. Before I leave, मेरा टाइम खत्म. बात करते करते कैसे टाइम चला गया पता ही नहीं चला. मुझे नहीं पता, खराब लगा होगा, अच्छा लगा होगा, मैंने बात गलत तरीके से भी शायद कहा होगा. I am apologetic, लेकिन बच्चा से बढ़कर हमारा सामने में आज कुछ भी नहीं है. एक बच्चा का डेवलपमेंट हो जाए 360 डिग्री, इससे ज्यादा सक्सेसफुल. देखिए, द फर्स्ट डे जिस दिन बच्चा चला था अपना खुद का पाव पे, आपका शायद आंसू भी निकल के आ गया होगा, मेरा बच्चा बड़ा हो गया. पहले दिन जिस दिन माँ पापा बुलाया था, उस दिन वाज ए रिमार्केबल डे दैट यू विल स्टिल रिमेंबर. जिस दिन बच्चा मैट्रिक पास करके आएगा, तब आपको लगेगा एक घाट आपने उतार दिया है. जब बच्चा नौकरी करके अपॉइंटमेंट लेटर लेके आएगा, यू विल फील यू हैड द मोस्ट सक्सेसफुल लाइफ एज अ ह्यूमन बीइंग. इसीलिए मैंने कहा, पेरेंट्स, बी वेरी केयरफुल अबाउट हाउ यू एक्ट इन फ्रंट ऑफ योर चाइल्ड, मॉरली, एथिकली. जाते जाते एक छोटा सा कहानी मैं बता के जाता हूँ. सुनना चाहेंगे ना? एक छोटा सा कहानी, a small story. Would you want to listen? किसी ने हाँ ना नहीं कहा, फिर भी मैं आपको कहानी बोलूंगा. क्या हुआ? What happened was there was a child in the school. एक बच्चा जो स्कूल से हमेशा चीजें चुराता था. पेन चुराता था, पेंसिल चुराता था, रबड़ चुराता था. एक बच्चा एक सामान चुराता. तो टीचर बहुत बिगड़ गई, और टीचर ने बार बार बोला, पता नहीं ये आपका बच्चा इतना चोरी क्यों करता रहता है, बहुत भयंकर चोरी करता है. लास्ट वार्निंग, अगली बार अगर ऐसा किया ना, आपका बच्चा को मैं स्कूल से निकाल दूंगा. तो पापा ने कहा, कोई नहीं, मैं समझा दूंगा मेरे बेटा को, ताकि स्कूल से ना चोरी करे. कुछ दिन बाद वापस बच्चा ने पेंसिल चोरी किया. तो पेंसिल चोरी करने के बाद में प्रिंसिपल ने इस बार पापा को बुलाया. प्रिंसिपल ने पापा को बुलाया और बेधड़क धुलाई दिया, और फिर बोला कि आपका बच्चा पूरा क्लासरूम का डेकोरम बिगाड़ दिया है. दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन. यू टेक योर चाइल्ड आउट ऑफ द स्कूल. आई विल इशू अ टीसी. तो जैसे जैसे रिक्वेस्ट किया, प्रिंसिपल नहीं माना, बच्चा को स्कूल से निकाल दिया. बच्चा को लेके जब वो घर आ रहा था, बच्चा को पापा ने पूछा, मेरा बात ध्यान से सुनिएगा, कहानी खत्म. बच्चा को पापा ने पूछा, पेंसिल चोरी क्यों किया? बोला, पेंसिल नहीं था मेरे पास में, मैंने चोरी किया. पापा ने कहा, मैंने अपना ऑफिस से जो एक बक्सा पेंसिल तुमको कल ही लाके दिया था, वो पेंसिल का क्या हुआ? और ये कहानी यहीं पे खत्म. आप जो करेंगे, जैसा करेंगे, वैसा ही रिफ्लेक्शन आएगा आपके पास में. फ्रेंड्स, I hope you enjoyed the 1 hour's time with the connection, not because of my talk, but then we could see all the parents here, class 3 and class 4. I sincerely wish you happy parenting, magnanimous parenting, because the success of your birth, the success of your life absolutely depends on the success of your child. You should make it happen. Not the school is absolutely responsible for your child's development. You as a whole is the powerhouse and the treasure house based on which the child is becoming the next country's superstar. Till then, happy parenting, stay at home, and God bless you all people. Thank you very, very much. Over to Father. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Hello, am I audible to all of you? Yes, we can hear. Yes. Thank you so much, Anjan sir, for sparing time from your busy schedule to grace this occasion.
We had a wonderful opportunity to hear your thoughts on happy parenting, on new age parenting. I'm sure it will encourage us to think differently and to change the way we think and to act differently too. So thank you once again for showing us a new way, a new path. I'm sure we'll take something home, something back home from today's conversation with you. Thank you. Thank you once again. Over to you, Father. Thank you, Sanyukta, and thank you so much. Thank you, Sanyukta, and thank you, Anjan, so much for the beautiful words that you have spoken. And whenever you came to the school, it was a great treat for us as well as for our parents. I'm sure we have really been nourished by whatever you have spoken. So thank you so much. Parents, let us give a round of applause to Anjan sir for being with us. Thank you. Now, parents, I would like to share with you not a story, but a real life incident which I heard from, which I read 2 days back. I'm sure all of you may be familiar with this incident. This is the story of a girl named Jyoti Kumari. Jyoti Kumari, she was a girl studying in class 8 in Bihar, and her father was working in Delhi, in the outer part of Delhi in Gurgaon. And when the lockdown started, the man, he was injured, and Jyoti Kumari came all the way to Gurgaon to look after her father. And when the lockdown started, they had no money to care for themselves. They lost all what they had. The little saving that they had to spend for their eating and for their daily maintenance. And finally, they did not have money even to pay the rent. And finally, they had to leave the place. And you imagine their house was 1,200 kilometers away from Gurgaon. And the girl studying in class 8, she told her father, I will drive you all the way from here to Bihar and take you home there. And being a very loving and caring father, he refused in the beginning. But then when the girl insisted, he accepted it. And that little girl, girl meant she was studying in class 8, she started cycling the father through a bicycle. She spent around 7 days to take her father all the way to home. And then finally they reached home. And when the Cycle Federation of India came to know about it, they have invited her to Delhi after the lockdown to come and to perform in front of them, because they believe that there is something special in this girl. And even the daughter of Donald Trump, Ivanka, even she has spoken, tweeted about the courage, the audacity, the mental strength and the physical strength of this girl called Jyoti Kumari. Now, dear parents and students, I'm sure most of you must have read about this girl. If not, please do a bit of research in Google and find out and read about her. Just think of the courage, the decision that this girl had taken, all the way cycling her father, keeping her father at the back of the cycle, and it took her 7 days to ride 1,200 kilometers, and she reached there. Now, this is a real story, an incident in which the human spirit of a young person spans out and comes out. And this is what we see in young people today. And these are some stories of courage and strength that has come out due to the coronavirus, or what we call as the lockdown. Now, why I told you this story? This incident I told you because often we are a group of people who are afraid of exposing our children to difficulties and struggles. We always want to protect them, care for them, and definitely we need to do that. But at the same time, it is also important that for their own future, in a strategic manner, with a certain plan and purpose, we need to expose them little bit of difficulties, little bit of struggles, little bit of pain, so that they are able to take up greater challenges in their life as the day go by.
And these days of lockdown is the best because you are with them, you care for them, and if at all the pain becomes too much, I'm sure you are capable of managing them. So, dear parents, wishing all of you a very happy parenting. Anjan sir has told you lots of beautiful ideas, and I'm sure he will be back with us at some point later to give us more training as the days go by. And then I would like to sincerely thank every one of you parents and also our teachers for being so magnanimous, so hardworking, so passionate about imparting education to our children. As I told you at the beginning, your children have lost nothing because our teachers have made it sure that they lose nothing. From morning till evening, you can see that they have changed from one platform to another. They have updated themselves with the technology at a very short span of time, recorded the classes, uploaded it into WhatsApp, again uploaded it into YouTube, and now they have also started taking Zoom classes. And I can tell you, it is not only the teachers who have worked, even the family members of the teachers have really been involved in imparting education to our children. Recording, and then it takes a lot of time preparing slides. It takes hours and hours, but then they have really given all what they have, their time, their energy, all the mobile numbers possible they have shared with you. And then parents, students have been calling them at any point of time, but they have been really wonderful teachers, and I really feel proud about what they have done, and I would like to acknowledge it in front of everyone. So, dear parents, on behalf of every one of us, let us give a round of applause to our teachers who are present here for all what they have done during these days of lockdown. So please give a round of applause and thank the teachers. And then parents, I want to thank all of you as well, along with the teachers and the children. You have been wonderful parents, that you have taken good care of them. And being with your children for 3 months without a break, it is not a joke. It is a tough thing. Perhaps parents also get an opportunity to be great teachers at this point of time. And CBSE has been asking us to teach the parents to be teachers. And this training that we had is also a process towards that. Because there is the old saying that parents are the first teachers and home is the first school. Parents are the first teachers and home is the first school. Now, due to Corona, thanks to Corona, home became the school, parents became the first teachers, and the teachers became the facilitators. And in fact, that is what the teachers are supposed to be doing. Teachers should be facilitators, helping the parents to impart education to the children. So, dear parents, you have really lived up to that expectation. You have supported the children to the best of your ability, looked after them, and then I'm sure it was not easy for you to manage them from morning till evening, not 1 day, 2 day, 3 day, for months. And even now we are not sure when you will be back to the school. It might take maybe another 1 or 2 months more. But then I'm sure you have enjoyed their little pranks, you have enjoyed their bit of their naughtiness, and then I'm sure it's a wonderful learning for every parent as well. In the social media, there was a joke doing the round that parents are praying to God that let there be a vaccine at the earliest so that the schools will be reopened and the children will be back in the school and not at home, because it's not very easy to look after them. So parents, thank you so much for all what you have been doing. Keep supporting our children, and I'm sure they will come out with flying colors. Now, regarding the school, we are waiting. Some things are clear. Till July, anyway, there will be no classes, and so June we will be having the classes as usual, and then we will be moving towards Zoom as well. So I request all the parents, please ensure that your children have a good smartphone, they have a good internet connection, and then we will also be having the Zoom live classes from now on. We will be having a mix of recorded classes as well as the Zoom live classes that will bring lot of interaction between the students and the teachers, and the students will be able to see their own companions as well. So we believe that
it will give a kind of real-time classroom experience to them, and that will help them as well in their mental and physical and stressful living in the process. So please ensure that they do have a smartphone. Please help them to operate the Zoom, and they are able to participate in the classes from morning as usual. And then chapter tests are going, and there it will be happening every time. Periodic test examination, periodic test, the examinations will be happening in the month of July. There will be some summer vacation by end of June. We will be giving you the complete detail, the timetable. It will all be available in the DSLIT Connect, in the calendar in your mobile app. So you will be getting all the details. And after that, we will be having the periodic test examination. It will be 40-mark exam, and it will be a mix of MCQ and also descriptive type questions. So the details you will be getting. So students, please keep studying. You lose nothing. It is business as usual. Everything will happen as it used to be. And that is the reason today you have even your morning speeches are happening. And after the holidays, we will also be having our assemblies happening, the school anthem. So everything will happen as it is, so that you will have a feel of the school being taken to your home, and everything, we hope by God's grace, everything shall happen well. So until then, we would like to wish all of you all the very best. Happy time, happy stay. Take good care of yourself. Ensure that stay home, stay safe, and take good care of yourself. Wash your hands, and then use sanitizers, and what all are the other security measures required, please use it. Please, parents, please know it for sure that your children are in safe hands. Nothing shall go wrong. We believe that God will protect and take care of everyone. We started sanitizing the school as well, hoping that in the month of July we shall all be back in the school. So please be rest assured that nothing shall go wrong. Everything that is humanly possible from the part of the school, we shall ensure that it will happen. And safety and security is of paramount importance, not only for parents but also for the school. And for that, we need the cooperation, support, and encouragement of every one of you. And that is what you have been giving. Wonderful, exciting parents, always supported, and we hope to get the same in the days to come as well. So once again, thank you so much. God bless everyone. God bless SFS. God bless our children, and all the best to the parents. Thank you. And now let us wind up with the school anthem. Thank you and good night. So let us all stand up for the school anthem. Champion of God's kingdom, you are the source of true wisdom. You are the champion of God's kingdom, you are the source of true wisdom. Christ, you are the radiance of this light. Dispel the shades of avidya, dispel the shades of avidya. Asatoma Satgamaya, Tamasoma Jyotirgamaya, Mrityoma Amritam Gamaya. Om Safas Jaya Jaya He. You brighten the way to God and human. You spread the light of Christ and love. You brighten the way to God and human. You spread the light of Christ and love. You teach the truth of Christ and wisdom.
built on your vision and mission. Asanomasa Gamaya, Tamasoma Jyoti Gamaya, Mrityoma Amritam Gamaya. Om Safas Jaya Jaya He. Om Safas Jaya Jaya He. Thank you, everyone, and good night.